नमस्कार बागवान साथियों, मैं जगमोहन नलवा एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस फेसबुक लाइव सेशन में। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो डेविड स्पेंसर है, जो एग्रोनॉमी एंड क्रॉप सॉल्यूशन मैनेजर हैं न्यूजीलैंड में, और ये यारा का वो दिखते हैं पोर्टफोलियो। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बर्ड ब्रेक टू फ्रूट सेट स्टेज पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमें कैसे हेल्प करता है एक अच्छी क्रॉप लेने में, अच्छी प्रोडक्शन और क्वालिटी को एनहेंस करने में। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट टाइम जो है पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर डेविड स्पेंसर ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी, और काफ़ी अच्छा वो सेशन रहा था। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा डेविड स्पेंसर का कि ही कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। सो वेलकम डेविड, thank you for being here with us today and helping farmer to understand the importance of balanced nutrition. Thank you, Jeg Mohan. I'm delighted to be invited by the Yara India team to come back and present. The last session I did was on post-harvest nutrition, so I think there's an important link between what you do at the end of the season and what we do at the start of the season. So I think it's important that we touch on the main points. I know that Prens from the South African team did a presentation a couple of weeks ago, also on the importance of nutrients from bud break to fruit set. So I just sort of like to, I guess, just reinforce those main points. So thanks again for the invitation, and let's make a start. Yeah, sure. So you can see the key nutrient requirements there at each growth stage. Interesting that I've highlighted the bud burst to flowering requirements, but if you actually look at the post-harvest nutrients that are required, I mean, they're pretty much the same nutrients. So I guess my message here is that what you do post-harvest is very, very important in terms of helping to, set the tree up. But then we have another opportunity as we come into a new season, really just to load those nutrients up again and make sure that we're doing all we can to enhance the flowering and get the best possible fruit set. So I think that's why we're here today, just to talk about which nutrients are important, for the first part of your season. Well, thank you, डेविड। बागवान साथियों, यहाँ पे जो डेविड स्पेंसर बताना चाह रहे हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड रहता है वही ऑलमोस्ट जो है बर्ड बस्ट पे भी यही न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, सो दैट के जो पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली एज अ रिजर्व प्लांट सिस्टम में स्टोर होते हैं और इनिशियल स्टेज पे काम आते हैं। और साथ ही साथ जो है बर्ड बस्ट स्टेज पे हमें वही न्यूट्रिएंट्स जो है रीफिल करने पड़ते हैं, सो दैट के फर्दर जो डेवलपमेंट है आगे उसकी जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। Yes, David. Okay, thank you. So the role of nutrients by apple growth stage. So the nutrients that we're really focusing on between bud burst and the start of flowering, I mean, NPK is always important, but your nitrogen, potassium, that's to help promote strong early growth of the plant tissue. So I guess we need to make sure that we have those nutrients in place at the very beginning as a soil application, so that we get that maximum tree growth. In the spring, we have a root flush. So we have a period of new root development in the autumn after harvest, but we also have a period of new root development in the spring. So we need to make sure that we're getting on some new season nutrients to actually, maximize that root development, but also to enhance better flowering. Calcium is also very important to help with new root and leaf development. So we'll talk about the product shortly, but I guess the message here is that we need to understand which are the main nutrients you need at the different growth stages, and then make sure that we're matching our fertilizer inputs to meet those nutrients. Just want to certainly emphasize zinc and boron.
zinc and boron are both very important trace elements for flowering and fruit set. So we have a really important window before flowering to make sure that we elevate those levels and make sure they're in adequate amounts. या तो बागवान साथियों, जैसे कि बर्ड बस्ट स्टेज पे स्पेंसर ने बताया कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो मैग्नीशियम है, ये जो स्ट्रॉन्ग अर्ली ग्रोथ है उसको सुनिश्चित करता है, और जो टिश्यूज की प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है और प्रोडक्टिविटी में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करता है. एज लॉन्ग एज फॉस्फोरस इज कंसर्न, वो जड़ों की डेवलपमेंट जैसे साल में जो 2 बार होती है, एक पोस्ट हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी ये डेवलपमेंट रहती है रूट्स की, और साथ ही साथ जो है अभी स्प्रिंग सीजन है, जैसे ही आपका सैप का मूवमेंट अब स्टार्ट हो चुका है, तो इस पीरियड में जो है रूट्स की डेवलपमेंट काफी एक्टिवली होती है. तो फॉस्फोरस का वहां पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अच्छी रूट ग्रोथ के लिए. कैल्शियम डेफिनेटली ये बूस्ट करता है लीफ ग्रोथ और क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, या फिर सेल डिवीजन जो भी सेल स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए जो कैल्शियम का रहना वो सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बोरॉन जो है डेफिनेटली आप समझते हैं कि पॉलिनेशन और अगर स्ट्रॉन्ग फ्लावरिंग उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है बोरॉन का बहुत महत्व रहता है. मैंगनीज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली टिश्यू ग्रोथ में, और जिंक जो है ये ऑप्टिमाइज करता है लीफ की डेवलपमेंट, लीफ के हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए, उसकी जो पत्ती की चौड़ाई है उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो ऑक्सिन है ग्रोथ हार्मोन उसको भी ये इंड्यूस करता है. तो जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है इस पर्टिकुलर पीरियड में. यस डेविड. Yep, thank you. Next slide. Okay. Right, so some of the key issues in trying to attain a high quality apple yield, I mean, we don't want a poor bud break and therefore less vegetative growth. So a lot of that really depends on what you have done post-harvest. We'll talk about that in a couple of slides. I mean, poor flowering, poor fruit setting, that's not what we're trying to achieve. So yeah, we need to make sure that we're putting the right nutrients on to try and get a strong flowering. Alternate bearing pattern, so that's really about biannual bearing, where you have a good fruit set one year and then a poor fruit set the following year. I mean, that all can hinge from what you have done this year that has an impact next year. So therefore we need to make sure that we don't have a weak flowering period, because that could have an impact not just on this year's growth but also what happens next year. So, and I think a key message which I always talk about is, if you have a healthy tree and you've got balanced nutrition, then you're going to have better resistance towards having problems with insects and diseases. So if you've got a strong, healthy tree, then you'll probably be less prone or less susceptible to having insect and pest problems. यस. बागवान साथियों, जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं. अगर आप देखें, बहुत सारे फार्मर जो है बर्ड ब्रेक जो है प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, फ्लावरिंग जो है वो पुअर रहती है, फ्रूट सेटिंग में दिक्कत आ जाती है, और कई बार फार्मर्स को जो है अच्छा यील्ड, कलर और साइज वगैरह नहीं मिल पाता है. जो अपीयरेंस है, शेल्फ लाइफ है, वो अच्छे से नहीं बन पाती है फ्रूट की. और अल्टरनेट बियरिंग एक साल बहुत अच्छी क्रॉप रहती है, नेक्स्ट ईयर वो 20-30% पे ड्रॉप हो जाती है. तो बेसिक जो क्रक्स है, बैलेंस न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझना होगा, और प्लांट को जो रिक्वायर्ड बैलेंस न्यूट्रिशन है वो सही समय पे देना होगा, सो दैट के प्लांट अपने फुल पोटेंशियल पे आए और वो आपको मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन और क्वालिटी दे दे. तो ये कुछ बैलेंस इंपॉर्टेंस का, बैलेंस न्यूट्रिशन का एक सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है. Yes, David. Thank you. This slide's important because if we have a look on the left-hand side there, it says, the trees use stored nutrients for early development. So when we talked about the importance of post-harvest, I mean, it's really the post-harvest period is when you have the opportunity. I sort of call it, putting the orchard back on the battery charger.
the trees worked hard during the season to produce fruit, and then it's important that you replace those nutrients. And by replacing the nutrients, then what you're trying to do is actually increase the amount of carbohydrate which is stored within the roots, which is stored within the buds, within the tree for the following spring. So if your tree goes into the winter weak, then you run the risk of the tree coming into the spring weak. So that's why we always focus on post-harvest to try and replenish the nutrients in the autumn before we go into winter. But then equally, we need to make sure that we've got good nutrients in the spring to start that process again. So a lot of what you do the previous year has an impact on what happens in your next crop. So I think we just need to be mindful, that at all stages we have the right nutrients replenishing the tree. Yep. या बागवान साथियों, यहाँ पे जो बात हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। पोस्ट हार्वेस्ट में जब हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो प्लांट सिस्टम में वो रिफिल हम करते हैं, उसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं। और क्योंकि प्लांट जो है एग्जॉस्ट हो रखा होता है हार्वेस्टिंग के बाद, तो हम ये बैलेंस न्यूट्रिशन रूट्स में, ट्रंक्स में और बर्ड्स में जाके ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, सो दैट कि आपका जो अगला साल है वो इंश्योर हो सके। अगर आपका पोस्ट हार्वेस्ट वीक रहा तो डेफिनेटली आपका जो आने वाला जो स्प्रिंग सीजन है, अभी बर्ड ब्रेक और इसके फ्लावरिंग जो टाइम आएगा, वो भी वीक होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे जो है हमारा अगले साल का जो है वो इंश्योर होता है। तभी आप देख पाएंगे कि जिनके हेल्दी बीमे बने हैं, बर्ड्स बने हैं, तो वो जो है अच्छी क्रॉप लेने में सक्षम होते हैं। उनकी जो फ्लावरिंग है, फ्रूट सेटिंग है, उसका रेशियो बहुत हाई रहता है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी जो पीरियड चल रहा है, इस फेज में हम बैलेंस न्यूट्रिशन देके आगे का जो उसका जो लाइफ साइकिल है प्लांट का और उसकी जो स्टेजेस है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। Thank you. So I think this slide's important because it really just helps to explain. You've got the tab along the top there with the different colors for nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, etc. So we need to know when the nutrients are required by the tree, and we need to make sure that we match that requirement. So I guess as in the picture with the elephant on the ball, I mean, it's about having the right balance. Apples especially, if you have an imbalance of nutrients, if you have too much potassium and not enough calcium, or you have too much nitrogen, too much vigor, then that will have an impact on the quality and what happens, at harvest. So the key message here is that we certainly need to have balanced nutrition, but nutrients applied in the right ratio at the right time. I mean, that is standard good practice. The example I've put in there with Nitrabor is that if we look at the nitrogen and the calcium requirement, they work in a similar, they're taken up in a similar way in the beginning of the season, but also post-harvest. So what that is highlighting is that if we know that we need good nitrogen, good calcium levels, at the beginning and the end of the season, then we need to make sure that we match the right product to meet that demand. So that's why we recommend Nitrabor at bud burst, between bud burst and fruit set. And that's why we recommend Nitrabor post-harvest as well, because then we're getting the calcium and the nitrogen into the tree. Equally, I mean, we also need to apply potassium and other key nutrients, but this is just an example that shows that if we apply calcium nitrate before the period of peak demand, then we're going to match what we need. Yep. वेल बागवान साथियों, जो ये आप ग्राफ आप सामने देख रहे हैं, तो ये ग्राफ ही दर्शाता है कि प्लांट को अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और वो अलग अलग रेशियो में जो है वो प्लांट अपटेक करता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन का सॉइल सिस्टम में होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके अगर नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा होगी तो वेजिटेटिव ग्रोथ में ज्यादा कन्वर्ट करेगा, और कैल्शियम जो है, कैल्शियम की कमी होगी तो डेफिनेटली रूट की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस न्यूट्रिशन सॉइल में सही समय पे सही रेशियो में डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में नाइट्रोजन और जो आपका व्हाट डू यू कॉल कैल्शियम है, इनिशियल स्टेज में इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ये पोस्ट हार्वेस्ट पे भी जो है इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी न्यूट्रिएंट अगर जरूरत से ज्यादा हो या कम उसमें हो, वो डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन और क्वालिटी को इफेक्ट करता है। इट मींस कि हमें जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो फुलफिल करनी है, और उसके लिए हमें बैलेंस न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। That's the analysis of Nitrabor. I mean, I think the key thing here is that Nitrabor is water-soluble, plant-available calcium. So I know when you look at a soil test, it might say that you've got quite a bit of calcium in the soil, but the calcium in the soil generally comes from applying lime to raise the pH, or it comes from, we use dolomite also in New Zealand to raise the pH. But that calcium is calcium carbonate. So it's a very low available form of calcium to the tree. So YaraMila Nitrabor has plant available calcium, and because the nitrogen is nitrate nitrogen, it actually helps to transport the calcium with the nitrogen into the tree very quickly. So nitrate nitrogen's especially very important when you've got cold soil temperatures at the beginning of the season, because the sort of the tree or the roots recognize that, you know, that's a very fast form of nitrogen, so it takes it up readily into the tree. It takes the calcium with it. But also important is that there is some boron in there as well, so 0.25% boron. The boron also is taken up into the tree. What is important here is that it's good to have the boron in with the Nitrabor, but you still need to put foliar boron as well to make sure that you're getting enough boron from both sources, from the Nitrabor, but also we'll talk about Bortrac shortly as a foliar. So Nitrabor is a very, very good choice for fast uptake and availability in the spring, but equally post-harvest as well. बागवान साथियों, देखिए यहाँ पे वैसे तो जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे फार्मर्स लाइम डाल के या डोलोमाइट, जैसे स्पेंसर ने बताया कि उसको डाल के भी पूरा किया जा सकता है, मगर जो बात करें कैल्शियम की, और वो भी सॉल्युबल फॉर्म में, जो अवेलेबल फॉर्म में रहता है, तो यारालीवा नाइट्राबोर जो है ये हाईली सॉल्युबल, इसमें जो कैल्शियम और नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है वो नाइट्रेट फॉर्म में भी है और अमोनिकल फॉर्म में भी है। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है प्लांट को, वो सही समय पे सही मात्रा में प्लांट जो है इसको अपटेक करता है। और नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन इसमें रहती है वो बहुत डे वन से ही प्लांट उसको अपटेक करना शुरू कर देता है, और अमोनिकल फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहती है वो लंबे समय तक जो है प्लांट को फीडिंग इफेक्ट देता है नाइट्रोजन की। और साथ ही साथ उसमें जो बोरॉन है 0.25%, वो भी बोरॉन की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है, और साथ ही साथ जो है आपके जो कैल्शियम का जो अपटेक है उसमें भी मदद करता है। तो यारालीवा नाइट्राबोर जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम नाइट्रेट, जो अगर आप अप्लाई करते हैं उसके जो रिजल्ट्स है वो भी रिमार्केबल है। Yeah, just some of the key points of Nitrabor. I mean, promotes root growth and development. When you have a period of new root development in the spring, then you know, we know about the importance of phosphate for new root development. So hence why we could put complex on as well, which we'll talk about in a minute. But also calcium nitrate. Nitrabor is also very important for root development. So it's the new root hairs which take up a lot of the nutrients into apples. And so anything that we can do to try and promote new hair root development to get water-soluble calcium into the roots, that's where Nitrabor is the ideal product. That does a very good job there. And really it's just about supporting that new growth in the spring. It's really topping up, or it's putting some new nutrient on from the post-harvest period. And we're just trying to do everything that we can to maximize that new growth and to promote, you know, the best quality flowering and set that we can. So and then water soluble calcium, there is a period where you will get some water soluble calcium up into the developing fruitlet.
in that initial cell division stage. So putting the Nitrabor on before we get to fruit set is important for actually getting some calcium into the tree, into that developing fruitlet. बागवान साथियों, नाइट्रोबोर का जो इम्पोर्टेंस है वो रूट ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी ये हेल्प करता है। जैसे कि स्पेंसर बता रहे हैं, फॉस्फोरस के अलावा जो न्यूट्रिएंट है, ये कैल्शियम भी जो है जड़ों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये जो नई ग्रोथ है उसको इनिशिएट करने में मदद करता है। प्रॉपर जो फ्लावरिंग है और फ्रूट फॉर्मेशन को डेवलप करने में इसका रोल रहता है। और देखा जाए तो जो फ्रूट ड्रॉपिंग, बहुत सारे फार्मर जो है ड्रॉपिंग को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो फ्रूट ड्रॉपिंग को भी ये रिड्यूस करता है और जो फ्रूट की डेवलपमेंट में भी काफ़ी मदद करता है। इसका जो अपटेक है वो बहुत अच्छा है, प्लांट इसको अच्छे से अवशोषित करता है और इसके जो आप रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स जो यूज़ कर रहे हैं नाइट्राबोर कॉम्प्लेक्स, YaraMila कॉम्प्लेक्स को, वो हर 10 साल 10 साल जो है अपनी प्रोडक्शन और क्वालिटी को अच्छा बनाने में सक्षम है। Thank you. YaraMila complex, that would be the main compound fertilizer we use in New Zealand. We've been using YaraMila complex now for probably 25, 30 years in New Zealand. The whole point about a compound fertilizer is that all the nutrients are contained within the one prill. So that means that you've got much greater uniformity in every prill. Every prill is the same. It contains the same amount of NPK, sulfur and magnesium. So you can see here the nutrient ratio is 12, 11, 18, which is very, very good for horticultural crops, including apples. And so with Nitrabor, we were focusing on the nitrate, nitrogen, and the water-soluble calcium, but we also equally need to focus on supplying enough phosphate, enough potassium, sulfur, and magnesium into a tree crop. The phosphorus isn't a huge amount that we're putting on in apples, but then the crop removal or the uptake of phosphorus in apples is less than nitrogen and potassium. So complex is perfect in terms of I see it as the ideal ratio for what we need for apples. So by putting on complex at the beginning of the season alongside Nitrabor and then applying complex again, sometimes we'll put complex on mid-season, but then we'll do another sort of NPK post-harvest just to make sure that we're getting those nutrients back into the system. But I think the important साथियों, YaraMila कॉम्प्लेक्स एक डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो अवेलेबल है और ऐसा प्रोडक्ट जो आपके प्लांट को 9 न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरॉन और मैंगनीज, 9 न्यूट्रिएंट्स आपको हर एक दाने में मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्लांट को। जो 17 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जिसमें 3 न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मिल जाता है। बाकी जो 14 है, 14 में से जो है 9 न्यूट्रिएंट्स जो है YaraMila कॉम्प्लेक्स में ही पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि स्पेंसर ने बताया कि नाइट्रोजन और पोटेशियम सबसे ज्यादा प्लांट जो है एब्जॉर्व करता है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि प्लांट की सारी जरूरतें पूरी करता है अलग अलग स्टेजेस पे। सो YaraMila कॉम्प्लेक्स एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है और आई एम श्योर कि जो फार्मर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके रिजल्ट्स भी देख पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के रूप में और पैदावार के रूप में। Yep. So I guess the key message is really what it says at the top there: supplying balanced nutrition from the beginning of the season to make sure that you get adequate supply of those key nutrients right from the beginning. So so with the NPK, it just means you're getting the right balanced nutrition. You're ensuring that all those nutrients are going to be supplied in sufficient amounts. And again, you're trying to make sure that you put that energy into the tree in the spring to improve flowering, to promote uniform fruit set. And then having the balanced NPK, as soon as you get to fruit set and then fruit development, then we're trying to do everything we can to optimize fruit size. So you need to make sure you're putting the product on early enough to make sure that those nutrients are available when the tree needs it.
जो बैलेंस न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट डेविड बता रहे हैं, तो डेफिनेटली जो YaraMila कॉम्प्लेक्स है वो सपोर्ट करता है। इनिशियल स्टेज से ही आपका जो ब्लड ब्रेक है वो हेल्दी रहता है, यूनिफॉर्म तरीके से वो ब्रेक होता है, और साथ ही काफ़ी लंबे समय तक प्लांट को जो है एग्जॉस्ट नहीं होने देता है न्यूट्रिएंट से। तो ब्लड ब्रेक भी अच्छा से होता है, फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में भी ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और वेजिटेटिव ग्रोथ और रूट की डेवलपमेंट इंश्योर होती है, जिसकी वजह से जो जड़ों की डेवलपमेंट अगर अच्छी है तो पौधा जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर पाता है। और ये फ्लावरिंग और यूनिफॉर्म फ्रूट सेटिंग के लिए मैक्सिमम फार्मर्स जो यूज़ करते हैं वो रेगुलर, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो यारा यूज़र फार्मर हैं और हम काफ़ी सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इवन पिछले 2 साल में फार्मर, बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके अल्टरनेट बियरिंग थी, क्रॉप अच्छे से नहीं लग पाई कि ड्राउट स्ट्रेस था, बट वो ऐसे भी फार्मर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी क्रॉप ली है और क्वालिटी प्रोड्यूस बनाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है फार्मर्स को अंडरस्टैंड करना कि वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश के बेसिस पे आप जो है ओवरऑल प्रोडक्शन और क्वालिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपका प्रोड्यूस है उसको क्वालिटी में लेके आना है, उसकी जो प्रोडक्शन को इंश्योर करना है, तो उसके लिए आपको बैलेंस न्यूट्रिशन जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और YaraMila जो कॉम्प्लेक्स है ये एक सबसे बेस्ट सोर्स है एक बैलेंस न्यूट्रिशन का। आउट ऑफ 17 9 न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई करें जो फार्मर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। I think what's important to also talk about here is that the potassium source, so the analysis in complex is 12, 11, 18 NPK. So the potassium source in complex comes from potassium sulfate. So in New Zealand, we pretty much only use sulfate of potash-based fertilizer, not murate of potash. If I'm doing, if I need to get the potassium levels up higher, say pre-planting, you know, in an orchard before we plant trees, sometimes I will use MOP because when the trees are young, I mean, we're going to leach the chloride out, so that doesn't matter so much. But especially when we're cropping and we're producing fruit, then we pretty much only use sulfate of potash. It's the right product to use, and I know there have been some studies done overseas to show that potassium sulfate actually even produce better color on apples. And so, for example, we'll often fertigate, potassium sulfate sources towards the end of the season to actually promote better fruit color. So I think you need to be careful about MOP is cheaper than SOP, but in my view, it's not the right source of potassium to use. So that's another reason why we use complex, because it's only potassium sulfate based and it's better for the orchard. बागवान साथियों, YaraMila कॉम्प्लेक्स में जो पोटाश पाया जाता है वो SOP पाया जाता है, सल्फेट ऑफ पोटाश। और जैसे कि न्यूजीलैंड में ये लोग MOP यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो क्लोराइड कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, उसके जो लीचिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो सॉल्ट इंडेक्स है उसका वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और SOP जो है अवेलेबल फॉर्म में रहता है, और इसका जो सल्फर भी इसमें प्लांट को मिलता है और साथ में पोटेशियम भी मिलता है, और इसकी वजह से जो है आपके फ्रूट का साइज और कलर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं उसकी यूजर एफिशिएंसी कितनी है। अगर उसकी यूजर एफिशिएंसी अच्छी है, प्लांट उसको सही समय पे एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसके आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए। MOP डेफिनेटली इसका जो यूजर एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली SOP के मुकाबले बहुत कम है, और इन टर्म्स ऑफ डोजेस भी अगर आप करेंगे तो SOP का जो डोज है वो काफ़ी कम हम रेकमेंड करते हैं। बर्ड ब्रेक पे 250 ग्राम्स पर प्लांट और 250 ग्राम्स जो है फ्रूट सेट पे रेकमेंड करते हैं, तो टोटल आधा किलो से जो है प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जो अदर अलग से हम SOP यूज करते हैं। और YaraMila कॉम्प्लेक्स में जो 18% क्लोराइड फ्री पोटाश आपको मिलता है, जो कि प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसके जो रिजल्ट्स है वो दिखते भी है।
Very good. Just want to talk about two of the key nutrients for flowering and fruit set. So Zintrac or zinc and boron. So firstly, Zintrac. You really get two good opportunities with zinc and boron post-harvest. So when you apply bud builder, that's the reason why we have zinc and boron as two of the key nutrients in bud builder, along with magnesium. But in the spring, there's also another opportunity just to top that zinc up. So it's important that we apply it early. I mean, Jeg Mulhan will talk about the correct timing. It's generally around that early sort of green tip stage, but it's important that we get enough zinc into the tree. I mean, just for the functions that zinc plays with auxin, being a growth hormone, and Zintrac's a very high analysis flowable. We've been selling Zintrac, Bortrac in New Zealand for probably over 30 years. Being a suspension, it's got a very high concentration of zinc, probably the highest zinc concentration on the market. It's got very, very good compatibility or tank mixability with other chemicals. It's got good plant absorption, but it also lasts in the plant for quite a long period of time. So therefore, you get that longer feeding effect. So so Zintrac, we certainly recommend that. I think towards the end of this presentation, Jeg Mulhan will just show the program that he has for Yara India on the apples, and that'll show that Zintrac positioning. बागवान साथियों, यारावीटा जिंट्रैक जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इट इज एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। और जैसे कि डेविड ने बताया कि 30 साल से भी ज़्यादा जो है न्यूजीलैंड में इसका इस्तेमाल करते हो गया, और 40 साल से ज़्यादा यारामिला कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हुए हो गया। तो इट शोज़ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसकी जो रिजल्ट्स है, इसकी जो एफिशिएंसी है, वो नेक्स्ट लेवल है। और बहुत सारे फार्मर जो यूज इसका कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट इस चीज का मिल रहा है। जो फार्मर जिंक का सोर्स देख रहे हैं चिलेटेड में, या यू कैन ऑलवेज कंपेयर, आई मीन जिंट्रेक को आप किसी फील्ड में जब भी इस्तेमाल करेंगे और उसके कंपैरेटिवली आप कोई भी प्रोडक्ट जिंक का इस्तेमाल करेंगे, तो आप 15-20 दिन के अंदर ही आपको काफी डिफरेंस नजर आता है। ये हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म है जिंक ऑक्साइड की, और 39.5% इसमें जिंक मिलता है आपको, जिंक ऑक्साइड। और इसकी जो यूजर एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, और एक बार इसका एप्लीकेशन करने पे ये आपके प्लांट को 92 डेज तक जो है जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होने देता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप यारावीटा जिंट्रैक को अप्लाई करते हैं, आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको फोलियर एप्लीकेशन में 1/2 इंच ग्रीन टिप पे स्प्रे कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन, उसको इंड्यूस करता है। और जब आपकी जो एपिकल ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, आप देख पाएंगे कि आपकी जो टाइट क्लस्टर स्टेज है, जो आपकी पिंक बर्ड स्टेज है, वो बहुत हेल्दी आती है। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में जो है जिंक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और इसका जो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, और ये बहुत सारे केमिकल्स के साथ, एग्रोकेमिकल्स के साथ कंपैटिबल है। आप इसको फंगिसाइड वगैरह के साथ भी इसको कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको जब भी आप इस्तेमाल करें, इस बॉटल को शेक जरूर करें, क्योंकि ये सस्पेंशन कंसंट्रेट है। तो इसको जब भी जो भी ऐसी फॉर्मुलेशन की चीजें होती है, उसको हमेशा इस्तेमाल करने से, मेजर करने से पहले शेक करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग लास्टिंग फीडिंग इफेक्ट है और सबसे सेफ फॉर्मुलेशन है। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, जिन फार्मर्स ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। यस डेविड। So just I think we talked about some of the key roles in zinc in that previous slide, but what I often say to growers in New Zealand is that zinc's very important for spur leaf development. So if we have a shortage of zinc, then it actually very much affects the size of the leaf. So it helps with better bud development. You get greener, larger, healthier leaves. And so if you've got healthier leaves, that sort of acts as the engine room, if you like, to promote better fruit size. So Jeg Mulhan talked about the functioning of several enzymes, including the growth hormone auxin. I mean, that's important for providing power to the plant. What's also interesting about zinc is it gives better skin finish. You actually end up with a fruit with much better skin quality.
So if you have low zinc, that can impact the quality of the fruit. So that just while we've got boron there, I mean, boron's important for bud development. It sort of works in quite closely with zinc. It improves flowering and fruit set, as we know, with pollen development. But also boron piggybacks calcium into the plant. So if we have low boron, that can actually sort of slow down the transport of calcium into the tree. So again, why we promote Nitrabor. But Nitrabor from a ground application point of view, but that's not enough boron for what we need overall for the tree. So that's why we need to put on foliar boron, both as bud builder at post-harvest, but also another application of boron as Bortrac in the spring. बागवान साथियों, यहाँ पे जो जिंक की बात हो रही थी, तो डेफिनेटली जब आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो लीफ सरफेस है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है और साथ में उसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट है उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से प्लांट जो है भोजन बना पाता है फर्दर जो आपकी फर्दर स्टेजेस होती है उसके लिए। और साथ ही साथ जो है ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि डेविड ने बताया कि इससे जो है फिनिशिंग, फ्रूट की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आती है। और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी, कोल्ड, स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का जो होता है घाव जो होते हैं, क्योंकि ये आपका जो है व्हाट डू यू कॉल, इसको कहते हैं आपका सॉरी आइस, वो स्किप हो रहा है अभी मेरे दिमाग से। तो ये इंड्यूस करता है ऑक्सीजन लेवल को और ग्रोथ हार्मोन है को इंड्यूस करता है, तो डेफिनेटली उस ग्रोथ भी आपके प्लांट सिस्टम में अच्छी चलती है, फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग बढ़िया होती है। और साथ ही साथ बहुत सारे जो फंक्शंस है, सेवरल एंजाइम्स और जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज है उसको भी रेगुलेट करता है। बोरॉन जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए। और इसका जो एप्लीकेशन हम करते हैं पिंक बर्ड स्टेज पे करते हैं, और साथ ही साथ जो है पोस्ट हार्वेस्ट में हम बर्ड बिल्डर के रूप में प्लांट सिस्टम में इसको स्टोर करते हैं। तो फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के लिए बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, वो आप सभी लोग जानते हैं। और याराविटा बॉट्रैक जो है ये बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है बोरोन इथ्रोमाइन, और सबसे सेफेस्ट बोरॉन है, इसकी कोई फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं होती है। जो भी फार्मर इसको इस्तेमाल करते हैं, आप बोरॉन के बारे में टॉक्सिसिटी का भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्मुलेशन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, जो भी आप दूसरे फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने बॉडी को नेजल उसको अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिप्रोटॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो काइंडली आप जब भी इस्तेमाल करें, मेरा सजेशन है कि आप सेफेस्ट फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करें जो फार्मर के लिए जो यूज़ कर रहा है उसके लिए, और इन्वायरमेंट के लिए भी जो सेफ हो। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ ही गए होंगे, और ये साथ ही साथ जो है पोलन को भी हेल्दी रखता है, उसको जो रिसेप्टिविटी पीरियड है स्टिग्मा का उसको बढ़ाता है, पोलन ट्यूब की हेल्थ को अच्छा करता है, और जिसकी वजह से जो है आपके चांसेस जो होते हैं फ्रूट सेटिंग के वो बढ़ जाते हैं। और डेफिनेटली ये जो स्टेम एंड क्रैकिंग है उससे भी बचाता है बोरॉन, जो आपको पता है दरारें पड़ जाती है कई बार इस पे तनों पे, तो बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से वो भी होता है। और साथ में फ्रूट में जो रस्टिंग की दिक्कत है उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट करता है, और साथ ही साथ जो है कैल्शियम को अपटेक करने में मदद करता है। तो बोरॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप याराविटा बॉट्रैक जो 1 ml पर लीटर के साथ हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप इस्तेमाल करें। Jake Mulhern, sorry, can you just ये go back मिनिमम, to can you go back to previous slide, please? यस Yeah. श्योर Yeah, sorry, just one thing. I think Jag Mulhern talked a little bit about this, but that last point I have on boron about reducing stemming, cracking, and russeting, that's really important. I mean, what boron does is it makes the cells more elastic. It gives the cells more give and take. Calcium is the glue that is sort of glue that glues all the cell walls together, but boron actually makes it more sort of elastic.
So if you have good boron in the apples, then it actually means that you tend to have less incidence of that, especially what we call stem end rusting. And stem end rusting we'll often see in varieties like Royal Gala. So if you have a shortage of boron, then it means that you haven't got enough sort of ability for the cells to sort of expand, if you like, and so you can sometimes get higher stem end rusting because you've got a lack of boron. So boron's important for all sorts of roles, as is zinc, but that's just a sort of quite an important point that we talk about in New Zealand, that making sure we have good boron levels to try and reduce the amount of russet in certain varieties. बागों साथियों, जैसे कि डेविड ने बताया कि बोरॉन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। वो तो जो जितनी भी सेल फॉर्मेशन होती है सेल डिवीजन के पीरियड में, तो उस पीरियड में सेल डिवीजन जब होता है तो डेफिनेटली जो सेल्स की इलास्टिसिटी अगर अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी जो अच्छी रहेगी, तो उसमें क्रैकिंग क्रूकिंग की समस्या नहीं आती है। तो अगर डेफिशिएंट रहेगा बोरॉन में प्लांट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो रसटिंग के रूप में भी आपको नजर आएगा, और प्लांट में क्रैकिंग के रूप में भी आपको कहीं ना कहीं वो स्टेम पे नजर आ सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोरॉन का जो सफिशिएंसी है वो रखें। नाइट्रोबोर से भी आपको बोरॉन मिल रहा है, और पिंक बर्ड स्टेज पे यारा सजेस्ट करती है आप यारावीटा बाबू साथियों, रियली सॉरी, अभी जो है हम जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Are we back?
Am I audible? Yes. You can hear me, Jagmohan? Yes, I can hear you. Let me just put the presentation here. So Yep. I think we were here in this Perfect. page. Perfect. बागुन साथी, आई एम रियली सॉरी क्योंकि आजकल जो है कनेक्शन कभी भी ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो वेरी वेरी सॉरी फॉर इट. तो अभी हम बात कर रहे हैं. Yeah, यस डेविड. I think we've talked about zinc and boron quite a bit there, Jagmohan. So we've got the main points across. So yeah, so Bortrac is our liquid boron product. That's been in the Yara range of products now. Again, we've been selling that for nearly 30 years in New Zealand. So it's a high concentration of boron. I mean, it is very, very tank mixable with other products. And so 10% boron, so very effective to add in with your products in the tank. Generally, we're targeting that around that sort of pink early bloom stage. So we'll bring up the program shortly where you can see where that slots in. So yeah, so zinc and boron, probably the two most important trace elements or micronutrients that we're applying before flowering. But yep, that's really the key message. बागुन साथी, जैसे कि हम ऑलरेडी बोरॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और हम इसको जो करते हैं वो पिंक स्टेज पे करते हैं जब आपका 5 to 10% फ्लावरिंग हो जाए, और इसको सजेस्ट करती है. और साथ ही साथ यू कैन आल्सो ऐड याराविटा बायोट्रैक आल्सो, जो बायोस्टिमुलेंट है. वो एक कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं. डेफिनेटली आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए. सो डेविड, दीज आर न्यूजीलैंड में जो फार्म्स हैं उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Yeah, the two varieties. Well, we've got Red Delicious. I mean, obviously you grow a lot of Royal Delicious in India, but that was just an orchard down in the southern part of New Zealand. A friend of mine took those photos this week, so here we are talking about the start of the new season in India, and we're at the end of our season producing these lovely apples. So I guess that's why we grow fruit. We're all proud and passionate about growing fruit and trying to produce the best quality we can. So it's rewarding when we get to this end of the season and we can put some nice fruit into the bin. So yeah. बागुन साथियों, डेफिनेटली जो डेविड बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड बेसिकली क्वालिटी फ्रूट के लिए जाना जाता है, और न्यूजीलैंड जो है मैक्सिमम देशों को जो अपना फ्रूट एक्सपोर्ट करता है. सो हाई एंड क्वालिटी का फ्रूट रहता है इनका, और डेफिनेटली उसके जो प्राइसेस है मार्केट में वो फार्मर्स को काफ़ी अच्छे मिलते हैं. तो अभी मैं आपको सीधा ले जाना चाहूँगा क्रॉप प्लान पे. और ये हमारे पास जो क्रॉप प्लान है वो 8 से 15 साल का जो क्रॉप प्लान है, और ये 16 से 25 साल का क्रॉप प्लान है, डिपेंडिंग ऑन टू द एज. तो अगर हम बात करते हैं YaraMila कॉम्प्लेक्स, YaraLiva नाइट्रोबोर और SOP की जो हम बेसल एप्लीकेशन करते हैं, वो 1 किलो आप YaraMila कॉम्प्लेक्स यूज कीजिए, आधा किलो YaraLiva नाइट्रोबोर और 250 ग्राम SOP यूज करेंगे 8 से 15 साल के पेड़ों में. और फ्रूट सेटिंग पे आप 250 ग्राम जो है YaraMila, YaraLiva और SOP फ्रूट सेटिंग पे दे सकते हैं. और जिन फार्मर्स का ड्राउट स्ट्रेस रहता है या कोई ऐसा पोर्शन रहता है जहाँ पे पानी की कमी हो या जमीन जो है सनी एरिया रहता है, तो ये वाला जो आपका एप्लीकेशन है फ्रूट सेट वाला, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं पहले वाले में. अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा एप्पल प्रोग्राम 16 to 25 ईयर्स का जो प्लांट है उसके लिए. और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है 1250 ग्राम हम इस्तेमाल कर रहे हैं YaraMila कॉम्प्लेक्स, और 750 ग्राम YaraLiva नाइट्रोबोर बर्ड ब्रेक पे, और साथ में 250 ग्राम जो है यारा को जो SOP आता है सल्फेट ऑफ पोटाश 0050, उसको हम बेसल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं. याराविटा जिंट्रैक जो है हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से 1/2 इंच ग्रीन टिप पे फोलियर एप्लीकेशन करेंगे. पिंक बर्ड स्टेज पे आप याराविटा जो बोर्ट्रैक है वो
150 ml तक जो है 200 लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.75 ml पर लीटर के हिसाब से। और फ्रूट सेटिंग में जो है डेफिनेटली आपको जिनके पास नमी रहती है तो वो फिर से 250 ग्राम YaraMila, YaraLiva और यारा का जो एसओपी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के ड्राउट स्ट्रेस या कंडीशन ऐसी रहती है, नमी कम रहती है फूड सेटिंग के टाइम पे, तो यही जो डोज है वो आप अभी बर्ड ब्रेक के टाइम पे इसमें ऐड कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। तो ये हमारा जो है क्रॉप प्लान है। और आपके हम चाहते हैं कि अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हम उनको एड्रेस करना चाहेंगे, तो प्लीज Diksha, can we have what to do for alternate bearing? This is a question from a farmer. Yeah, Am I audible? You want me to start answering? I think there's a network issue. I'm not able to hear you, David. Well, can I answer it? Yes. देखिए, अल्टरनेट बियरिंग कब आती है? जब प्लांट का जो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। और जैसे कि हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आप जो एग्जॉस्टेड प्लांट होता है उसको दोबारा से हम रिचार्ज करते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से रिचार्ज करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें इसी साल ही बीमा स्ट्रॉन्ग करना होता है, जो बर्ड की जो हेल्थ है उसको इंश्योर करना होता है, सो दैट कि नेक्स्ट ईयर जो है आपका जो है बीमा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उसकी जो उस पे जो हेल्दी फ्लावर आएगा और उसके जो सेटिंग की चांसेस है वो बेटर रहते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे कई बार बारिश आ जाती है, टेम्परेचर डाउन चला जाता है, तो जो हेल्दी बर्ड होता है उसके ऊपर हेल्दी फ्लावर आता है, उसमें इम्यूनिटी रेजिस्टेंस होता है, ठंड से लड़ने की क्षमता रहती है, तो उसके सेटिंग के चांसेस बेटर होते हैं। वेयर इन इफ यू सी वीक बर्ड्स पे वीक फ्लावर आता है और उसके सेटिंग के चांसेस कम रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है बैलेंस न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें थ्रू आउट द ईयर, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर दें, और पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है अल्टरनेट बियरिंग को इफेक्ट करने रिड्यूस करने के लिए। So David, can you hear me? Am I audible? Yeah, can you hear me? David? Yeah, now I can hear you. I can hear you. I can hear There you. was a question. Yeah, there was a question related to alternate bearing. I have answered it. If you want to put any, so if you want to answer it, you can answer it too. Yep. So you can hear me okay now? You can hear me? Yes. Yes, we can go for another question because I've already answered it. Okay. The only other thing I'll say. The question is pollinizing. Can you? Can you see the questions? Yes. Let me just pollinize a golden apple. Pollinize a golden apple के फ्लावर को पिस कर कि आप डेविड को पहले आंसर करने दो, फिर उसको रिपीट करो, फिर आप अपना Yes, David, this question is actually not clear. Okay. सर, मैंने पोस्ट हार्वेस्ट में फुल डोज दिया है YaraMila का, तो क्या अभी बहुत बस पर भी फिर से हमें farmer is asking that at post harvest he has applied YaraMila and YaraLiva nutrient, and
do he have to apply the same nutrients at bud break? This is the question, David. Generally, what you're doing after harvest is you're trying to, as I said earlier, trying to recharge the battery, try and get the nutrients back into the tree and into the roots to replace what you've lost during the season. So the tree is quite efficient at actually helping to sort of drag those nutrients back into the roots, back into the tree, and store them, for the next season. But I think what's important is that we need to also, so the storage component is important from what has been carried over from post-harvest, but equally we need to top up those nutrients in the spring. If we don't apply new season nutrients in the spring, then we won't have enough nutrient for what the tree needs. So we can't just rely on what we've put on post-harvest. We need to attack it really at both ends. We need to do post-harvest and we need to do spring application. So it's not a double up. It's making sure that we put on the spring application, which is just as important as the post-harvest application, because the spring application is going to have that extended period of nutrient supply past fruit set and fruit development. Yes. तो संजीव जी, जितना इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट डालना है, दैट इज बेसिकली कि प्लांट को जो न्यूट्रिशनल लॉस हुआ है उसको दोबारा से रिफिल करने के लिए, और इनिशियल स्टेज जो बड ब्रेक की आती है टिल फ्रूट सेट तक, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है, क्योंकि पत्तियां नहीं रहती तो भोजन नहीं बन पाता है, तो वो स्टोर जो एनर्जी होती है वो उस टाइम पे काम आती है. बट क्योंकि ये पीरियड बहुत लंबा रहता है, आपका फ्रूट डेवलपमेंट, आगे फ्रूट सेटिंग होगा, उसका वॉलनट स्टेज आएगा, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आएगा, उस पीरियड को भी जो है कम अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमें डेफिनेटली जो है न्यूट्रिशन बड ब्रेक पे जो स्प्रिंग सीजन है उसमें भी अप्लाई करना होगा, ताकि आप इतने लंबे पीरियड को जो है प्लांट को सपोर्ट कर सके उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. तो डेफिनेटली इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. Can we add Zintrac and HMO at half-inch green tip? Is it compatible? David, do you do this thing in New Zealand? But we do it in India. What's HMO? Is there an yes, with HMO, actually, we can. Farmer is asking, can we add Zintrac with HMO at half-inch green tip? So we have conducted so many trials in previous few years. So it is compatible. We have seen good results with it. So because since it is not used in New Zealand that ways, but because farmers have a problem putting two things, because HMO is sprayed at green tip, and at the same time they have to apply zinc also. So is HMO, is it oil? Yes, horticulture mineral oil. Yes. Yeah. No, those two are tank mixable. So निशांत जी, देखिए, हमने ये नरेश कश्यप जी और काफी और भी फार्मर्स हैं जिनके वहां हमने इसके ट्रायल्स लगाए थे, और वो लास्ट ईयर भी उन्होंने ये कॉम्बिनेशन कराया, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ इसमें जो है फार्मर का टाइम भी बच जाता है. और ये बस द ओनली थिंग इज कि इसको करना सेपरेटली है, मतलब जो भी मिक्सिंग आप करेंगे वो एक ही बकेट में मिक्स नहीं करेंगे, सेपरेटली फ्रेश पानी में दोनों चीजों को घोलेंगे और उसको टैंक मिक्स करके उसकी फोलियर एप्लीकेशन कर देंगे. तो ये चीजें हमने आजमाई हैं पिछले 2 सालों में, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं. David, farmer is asking that what is the right stage to apply Bortrac? Normally we apply it at what we call around that open cluster. So we normally, like if you're going to put Zintrac on, the Zintrac needs to go on very early, no sort of later than the green tip stage, half green tip. But with boron, we normally wait until we're putting that on at what we call sort of, that
pink stage or the open cluster, because we need to make sure. I mean, boron's important for flower, sort of to help with pollen viability and help to get a better sort of flowering and fruit set. So we need to put it on pre the main flower coming out. So we tend to say what we call pink, or that popcorn stage, and people may put sometimes 2 applications on, but normally that's coincided with your fungicide. So generally it would be one of your first fungicides that you're putting the boron on with, but certainly before the main bloom comes out, around that popcorn pink stage. रमेश जी, जैसे कि डेविड ने बताया कि जब या तो टाइट क्लस्टर स्टेज जो ओपन हो रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड में, या पिंक बर्ड स्टेज जो है, ये स्टेजेस है जब आपको बोरट्रैक का फोलियर एप्लीकेशन करना चाहिए, ताकि बोरॉन की जो रिक्वायरमेंट है पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है उसकी लॉन्गेशन के लिए, पोलन की जो हेल्थ है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है उसको मेंटेन के लिए करने के लिए आप इसको इन 2 स्टेजेस पे, ओपन क्लस्टर स्टेज या फिर आप इसको पिंक बर्ड स्टेज पे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पिंक बर्ड स्टेज पे जब आपका 5% 10% फ्लावर आपका खुल जाता है, बाकी खुलने वाला होता है। बाकी जो यारा यूजर हैं, जहां पे मैं पिछले कल ही रामपुर में था तरुण शर्मा जी के उसमें, उनके नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म जो है बर्ड ब्रेक हुआ है। तो कहने का मतलब है, ये अगर आप प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं तो आपका जो बर्ड ब्रेक है वो यूनिफॉर्म आता है, आपकी फ्लावरिंग यूनिफॉर्म रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन 2 पर्टिकुलर स्टेज पे आप बोरट्रैक का एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक यू रमेश जी। Fertilizer in HDP for 1 year old plant. So actually I had a slide, but I have to see it. Just give me a moment if I can share it. आप देखिए, मैं आपको फिलहाल सलाह देना चाहता हूं कि जैसे HDP 1 साल का जो पौधा है उसमें आप YaraMila कॉम्प्लेक्स करीब आप 40 ग्राम्स के आसपास डालिए, और जो YaraLiva नाइट्राबोर है 30 ग्राम्स के आसपास आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ जो है आप इसमें जो है कैल्सिनेट और यारा रेगा हमारा आता है, उसको जो है 3 ग्राम्स पर प्लांट के हिसाब से जो है इसकी जो है ड्रिप में एप्लीकेशन कीजिए। ये हम आपको जो है HDP का प्रोग्राम, जाहिद जी आप मेरा नंबर नोट कीजिए, मैं आपको आपका इसका जो शेड्यूल है प्रोग्राम में वो शेयर करूंगा। मेरा नंबर 9828244354 है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए तो मैं आपको इसका शेयर कर दूंगा। In HDP for 1 year old plants in New Zealand, what are you using, David, for 1 year plant? Normally, in New Zealand? Depends on whether we've got fertigation or not, but generally when we're planting year 1 and 2, we'll do multiple hand dressings of complex and the likes of Nitrabor. So we generally put on, each time we fertilize, we do about 50 grams per tree. So 50 grams is about a handful, give or take. And then we don't put it right next to the tree. We make sure we put it in a circle around the tree, because that helps to draw the roots out. So you put it in a diameter around the tree, maybe 1 foot out from the trunk. And then we do hand dressings maybe every 3 weeks. We might do 3 applications of each, because we find that if we go to 4 weeks, then the plants start running out of nutrients. So we do 3 weekly applications. And that depends on the tree vigor. So we just sort of assess what the tree looks like and whether we need to continue. But also with a high density planting now, a lot of people are set up for fertigation. So then they'll start fertigating, calcium nitrate, calcinate, or we have crystalline, you have Yara. But the important thing is that you need to keep that momentum coming, to keep that momentum going during the season, to try and turn the young trees into an orchard, maximize that growth. So year 3 we're using a tractor and fertilizer spreader,
But for the first 2 years, we're hand dressing. सो हैंड ड्रेसिंग इसको जो मुट्ठी भर जो है आपने यारामिला कॉम्प्लेक्स और यारालीवर नाइट्रोबो जो है वो बिल्कुल तने के साथ में नहीं डालना, थोड़ा बाहर की तरफ जा ताकि जो रूट्स है उसकी बाहर की तरफ जाए। और साथ ही साथ हम जो इसको अप्लाई कर रहे हैं वो यारा रेगा जो है वाटर सॉल्युबल आया है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसमें 8 न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिगेशन ग्रेड है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। महीने में 4 बार आप उसको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। जिन लोगों के पास ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो उसको ड्राई भी उसको अप्लाई करके ऊपर से पानी दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा विकल्प रहेगा 1 साल के पेड़ के लिए। और मैंने आपको जो नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको उसको डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। As per my recent soil test report, my soil have low nitrogen, low phosphorus, and high potassium. Can you suggest any combination of current stage as complex have high potassium and I don't need that? Can I fulfill my phosphorus requirement by foliar method? This is the question. Yeah, I mean, if you have low soil phosphate, then you need to try and elevate those phosphorus levels if you can in the soil. Yes, we can put on foliar phosphate, and we do. We put on, I mean, tonight's session is really about up to fruit set, but from fruit set onwards, we do put on foliar phosphorus in New Zealand in the form of Senifos. We apply that with Stop It. But in the soil test, I mean, that's why we do a soil test, right? If you have low phosphorus in the soil, then we need to address that. So in New Zealand, if we had low phosphate, then we would apply superphosphate, or if we had low nitrogen as well, we might apply diammonium phosphate, DAP. So it's important to try and bring up those base nutrients so that they're in balance, and then we're then applying complex or Nitrabor or balanced NPK for what we need for crop removal, for what we call a maintenance program for the season. So if you do have, I'm not so concerned about not so concerned about low nitrogen in the soil, because we can meet that need with Nitrabor or complex, but having low phosphate, you might make a decision to put single super on if you have that available. I don't know. Actually, I'm not getting your voice, David. I think there may be some issue related to. Am I audible? Yeah. You can't hear me? David, I don't know why your voice is absolutely cracking and I'm not getting you what you're saying. Both are audible. Okay, I'm not getting David's voice basically, though it is audible to farmers, I believe. This is what Diksha is saying on chat. So it is really important. मैंने जो बात सुनी है बागुन साथी कि आपका जो है पोटैश काफी हाई है, तो डेफिनेटली आप इस केस में आप जो पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी अगर आपके सॉइल में हो सकता है कि वो फिक्सेशन हो रखा हो, तो इधर या फिर आप एसओपी की जो डोज है अगर वो हाई दिखा रहा है तो उसको आप जो है एसओपी की जो डोज है वो आप 25% रिड्यूस कर सकते हैं। अगर जो आपका वेरी हाई अगर आपका बता रहा है तो उसको आप जो है 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं एसओपी की एप्लीकेशन। तो दिस इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड। अनदर क्वेश्चन इज 0.25% boron sufficient for calcium uptake in Nitrabor. Farmer is asking like 0.25% boron sufficient for calcium uptake, or should we use it in additional by other means? Will boron which we apply
for foliar method helps in uptaking the calcium from soil. So farmer is asking that 2.25% boron is sufficient, or we need to apply additional boron. David, it seems as if you are on mute. तो बागवान साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेफिनेटली हमें जो एडिशनली हमें देना पड़ता है बोरॉन, जैसे कि 0.25% जो है वो नाइट्राबोर से आपको अवेलेबल हो जाता है थ्रू सॉइल, बट देन फोलियर एप्लीकेशन में भी जो है आप इसको पिंक बर्ड स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं और जो बोरॉन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट पे तो आप बड बिल्डर कर ही रहे हैं, तो वहां से भी आपको जो है बोरॉन की जो अवेलेबिलिटी है स्टोर जड़ों में, तने में और बर्ड्स में जाके स्टोरेज उसका हो जाता है, तो रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल हो जाती है। एनी न्यू क्वेश्चन? थैंक यू राजन जी। आई हैव डेविड, एम आई ऑडिबल टू यू? Okay. Now Rajan Chauhan have another question. I have applied dolomite in my farm due to low pH. If I use calcium nitrate now, can overuse of calcium cause an issue? Should we go with single application or multiple of nutrient fruit? So farmer is asking that he had applied dolomite in his orchard in the basin just to reduce the pH, to lower down the pH. So you can hear me now? I mean, his pH was down. He wanted to increase the pH. He have used dolomite. So what he is asking is, is there any issue if he apply Nitrabor now till fruit development stage? No problem. Yeah, sorry, you can hear me now? Sorry, I was on mute. I don't know why. If you have low soil pH, then yes, you need to apply dolomite or lime to increase the pH. That's very important. But if we go back to my comment earlier, the calcium carbonate is a very low solubility form of calcium, so it's not really that available to the tree for calcium requirement. So if you apply calcium nitrate, then that is the better plant available form of calcium. So you won't, and when you apply calcium nitrate around the roots, it actually is pretty much pH neutral, or it even slightly raises the pH slightly around the roots. So you won't find that you suddenly have too much or too high a pH. It won't have that effect. So yes, if you bring the pH up with dolomite, once you have your pH in the right zone, then calcium nitrate during the season is recommended. And generally we will do multiple applications for fertigation right through the season to help with tree growth. Actually, I hope डेविड की जो बातें आपको सुनाई दी होंगी, बिकॉज मेरे पास डेविड की जो बात है वो क्लियरली नेटवर्क इशू की वजह से शायद आई नहीं है। तो वैसे जो मुझे जहां तक लगता है कि जो डोलोमाइट आपने यूज किया है पीएच को रेक्टिफाई करने के लिए, तो क्योंकि जो कैल्शियम है वो इतना, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि सॉल्युबल कैल्शियम मिलना प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इस केस में जो है डेफिनेटली आपको जो है नाइट्राबोर का डेफिनेटली आप एप्लीकेशन कीजिए, ताकि कैल्शियम जो है सही समय पे अवेलेबल रहे प्लांट को। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड ब्रेक और फ्रूट सेटिंग के टाइम तक आप नाइट्राबोर का, कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसके बाद जो है आप इसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, क्योंकि लेटर स्टेज में नाइट्रोजन हायर उस पर जाने पे तो लेटर कलर के इश्यूज भी आ सकते हैं। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड रहता है लेटर स्टेज फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में, मगर बहुत मिनिमल डोज पे रिक्वायर्ड रहता है,
तो इसीलिए जो है आप बड ब्रेक स्टेज और फ्रूट सेट स्टेज पे आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं. David, there is a question: how to lower pH as my orchard has it like 7.5 plus. The pH of the farmer's orchard is 7.5. So Yep. how he is going to reduce the pH? The cheapest way to do Am I it is audible? elementals. Yes, you can hear me? You Yes, can hear me? David, go ahead. Yeah. The cheapest way to do it is to use sulfur, elemental sulfur. So we call it sulfur prills in New Zealand. It's a very high percentage. It's generally about 90% sulfur. We call it elemental sulfur. So if you want to drag the pH down, then you can apply elemental sulfur. I don't know whether it's available in India or not, but that's how we would generally do it. And we might put 200 or 300 kilos per hectare on. If you want to do it with fertilizer, sometimes you can do it with anything that contains ammonia, because if it's got hydrogen ions in the formula, then that tends to be acidifying. So at 7.5, I mean, it's not too bad. I mean, I wouldn't want to go any higher, but at 7.5, what you do is you start cutting off the availability of trace elements. So you could even get a bit of iron deficiency in the tree. So you don't want to be above 7.5. But if you can find sulfur, then that is a way of doing it. बहुत सारी बातें जो है डेविड की मेरे पास थोड़ी आवाज कम आ रही है, मगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आपको पीएच को लोअर डाउन करने के लिए जो है आप जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका जो बेसल एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो गई है फर्टिलाइजर की, और जो सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट है या फिर सल्फर जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं जस्ट टू लोअर इट डाउन. और जैसे आप YaraMila कॉम्प्लेक्स आप यूज करेंगे तो उसमें भी 8% सल्फर है, तो YaraMila कॉम्प्लेक्स भी एक अच्छा विकल्प है जो आपको हेल्प करेगा इसको पीएच को लोअर डाउन करने में. बट नेक्स्ट ईयर डोमेंट स्टेज में जब दिसंबर जनवरी के या फरवरी में आप जो है जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका पीएच डाउन आ जाए. ये देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सुरेश ठाकुर जी. Can we use mixture of Zintrac and Bortrac at the time of pink bud stage, or 5 to 10% of flowering? No. No, because you have to apply Zintrac early. We only get green tip. We can't apply Zintrac later. So two different timings. तो So बागवान no, साथी, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप इसको अवॉइड करें. I mean, अगर आपने करना भी है, जो हमने रिजल्ट्स इसके देखे हैं, वो आप बॉटरैक और जिंट्रैक जो है बहुत सारे फार्मर जो है टाइट क्लस्टर स्टेज पे इसको अप्लाई करते हैं, बट उससे ज्यादा आगे जो आप फ्लावरिंग बोल रहे हैं उस स्टेज पे जो है आप जिंट्रैक को अवॉइड करें. Javed Iqbal is asking, how can we identify original Yara fertilizer? सो इसका जो है जावेद जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि यारा के जो भी बैग्स आते हैं उसके ऊपर जो है क्यूआर कोड रहता है, इन प्रिंट रहता है, और साथ ही साथ एक छोटा सा अलग से भी रहता है जिसके बेसिस पे आप एक फार्म केयर ऐप है, उस फार्म केयर ऐप पे आप जो है क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और या फिर जो नियरेस्ट आपके प्रतिनिधि हैं यारा के, आप उनको भी जो है अपना समस्या बता सकते हैं, या फिर उनको जो है क्यूआर कोड का फोटो खींच के भेज सकते हैं ताकि वो आपको जो है उसका कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है उसके बारे में बता सके. देयर इज अनदर क्वेश्चन. What is role of water pH with foliar fertilizer? generally in New Does Zealand, this I mean, affect? it can do. Yeah, it's a good question. I mean, generally in New Zealand, our pH of our water is fairly neutral. So our water is generally around 7 pH. When we add
agrochemicals when we add fertilizer into the tank. Generally, with the nature of some foliar fertilizers have a higher pH than 7 and some have a lower pH, but with the amount that we're putting into a tank of water, it generally doesn't alter the pH too much. So generally we want to try and avoid alkaline mixes. If the pH goes too high, then there has always been discussion about, does that affect the efficacy or the efficiency of the pesticide or the nutrient. So generally we're trying to maintain a neutral pH, and a pH of about 5 or 6 would be ideal. If you have a problem with your spray water and it's too high, there are ways that you can acidify that. There are acidifiers on the market to try and bring your pH down. But generally with most of the Yara foliar fertilizers, with the amount that we're using and the volume of water, it doesn't, make the mix too high. I mean, generally it's okay, but as long as your pH is around that 5 to 7, then we don't normally see any problem. Yes. So pH को rectify करने के लिए अगर because they are using stored water at times, so my suggestion to you is in case अगर pH आपका बहुत ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, तो आप इसको एक बार तो ऑक्सीजनेशन उसकी जरूर कीजिए, क्योंकि काफी टाइम से जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन चला जाता है, तो आपको क्या करना होता है कि उसमें जो बाल्टी लेके उसको ऊपर से काफी ऊपर से पोर करके दोबारा से उसमें उसको ऑक्सीजनेशन करनी होती है, ताकि उसमें बुलबुले आए और ऑक्सीजन लेवल वाटर के अंदर बढ़ जाए। और बहुत सारे लोग जो है वो, मैं इसको वैसे सजेस्ट नहीं करूंगा, बट काफी फार्मर्स जो है इसको सिरका जो होता है कुछ परसेंटेज कुछ अमाउंट में उसको अप्लाई करते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। वैसे जो नॉर्मली है 5 to 6 से 7 के बीच में जो है न्यूट्रल, नियर न्यूट्रल इज ओके। Rahul is asking question 1261. This is MAP 1261 at half inch में यूज करने से सल्फर क्या साथ? The farmer is asking can we use 1261 Yara MAP with sulfur? Yeah. 61 times 0.44. Yeah, sometimes we use MAP early if we have very low phosphate levels. So if you have very low phosphate levels, then sometimes it's good to have a higher phosphate product to bring the phosphate levels up. But once our phosphate levels are okay in the soil, then we just tend to use complex, because complex becomes more of a maintenance approach. But yes, you can use Actually, MAP. David, the farmer is asking that whether can we use this MAP in foliar application at basically farmer are doing it at pink burst stage. They're using 1 kg MAP with sulfur. What can we mix sulfur and MAP together at the pink burst stage? As a foliar? Yes, as a foliar. No, I wouldn't. I mean, we never have in New Zealand. I mean, I would find that too risky from a crop safety point of view. So no, I wouldn't. But we don't do that in New Zealand. So I wouldn't. I think the whole point about foliar applications is that you need to use a formulated product that has a label recommendation. You know that it's tank mixable, that it's safe, it's going to work. I think if you start to use other fertilizers as a foliar and there's no recommendation, then what happens when it goes wrong? I mean, it's there's too much risk involved there. That's just my opinion. तो बागवान साथी इस केस में जो है रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। जो आप ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स जो रेकमेंडेड होते हैं उसी का ही इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है और इस
केस में कई बार क्या हो सकता है, अगर कुछ गलत हो जाए तो पूरे साल का जो लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए, फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, और जो रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ ही आप जाइए प्लीज। There is a question from Ankit. How does powder boron is safe when it comes to human health? How does boron ethylamine is different from boric acid and B20? I'm not sure what those products are. I mean, boric acid we normally apply as a solid application, like in sodium borate, as a solid fertilizer. I mean, the Bortrac is actually, has a bit of nitrogen in there as well, and that actually comes from the ethanolamine formulation. In terms of human health, I'm not too sure. I mean, as with any fertilizer, it comes with a material safety data sheet. So, I mean, that safety data sheet has to outline any implications for human or animal health or safety measures, firefighting. I don't know the effect on human health, but anyway, there is a safety data sheet that explains that. But Bortrac is based on the ethanolamine, and I mean it's a very liquid Bortrac. I mean it's as safe a compound as we can get. So yeah. तो बागवान साथी, जैसे कि डेविड ने बताया, वैसे मैं थोड़ा सा आपके इस पॉइंट के लिए क्लैरिटी थोड़ी सी ले आता हूँ। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था इसी सेशन में, जो बोरोन इथोलोमाइन है वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बोरोन, अगर आप एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ से बोलें और सेफ्टी पॉइंट ऑफ से बात करें, तो वो सबसे सेफेस्ट बोरोन है जो आप अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बोरिक एसिड, जैसे कि डेविड ने बताया कि ये वो लोग अगर जरूरत पड़ती है तो सॉइल एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो पाउडर फॉर्म में आप बोरॉन इस्तेमाल करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने नाक को अच्छे से कवर करके रखें अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो, बिकॉज इसका जो डस्ट है, जब भी आप इसको मिक्स करते हैं उससे जो डस्ट निकलती है, अगर वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है तो कहीं ना कहीं वो रिप्रोटॉक्सिसिटी का भी कारण बनती है, जिसमें जो प्रजनन अंगों की जो क्षमता होती है उसको डिक्लाइन करती है। इनफर्टिलिटी ये बढ़ सकती है अगर कोई फार्मर उसको इस्तेमाल कर रहा है और उसके इम्यून सिस्टम में श्वास के थ्रू वो सिस्टम आपकी बॉडी में जा रहा है, तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है। और अगर आप इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि इस बोरॉन जो है ये कैसे इसकी टॉक्सिसिटी लेवल कैसे इसको आप एड्रेस करें, मतलब उस पर भी आप एक बार चेक करिए कि बोरॉन कैसे टॉक्सिक हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो आपको सेफ फॉर्मुलेशन ही आप इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आदमी के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि घास पे जाएगा वो आपके जो जानवर है डंगर के लिए आप वो घास उसको चारा देंगे, तो वो सारी चीजें देखनी होती है। तो सेफ फॉर्मुलेशन आप इस्तेमाल कीजिए। मुकेश जोशी, जिंक के साथ कुछ और ऐड कर सकते हैं? मुकेश जोशी इज आस्किंग दैट कैन वी मिक्स एनीथिंग विद Zintrac, जिंक के साथ कैन वी मिक्स एनीथिंग विद Zintrac और जिंक? Well, generally, if they're applying Zintrac early around that green tip stage, then yeah, there is a possibility that might go with an insecticide or go with your oil. I think you said earlier, you had your HMO, your high mineral oil. So often it could be applied with the oil, but no later than green tip. I mean, you don't apply it any later. So whatever you would be applying at that stage would more likely to be an insecticide or an oil. So, I mean, we have a tank mix service, tankmix.com, that we use to see what products can be put in the tank together. So that always is our sort of guideline, if you like, about what can be mixed and what can't. But it's about the timing, making sure that you don't put something on at the wrong time. तो मुकेश जी, आप इस ड्रिंक को जो है डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्टेज है, हाफ इंच ग्रीन टिप है, तो कई फार्मर्स जो है ऑयल के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, और कुछ फार्मर्स जो है जैसे उनको फंजीसाइड करना होता है तो आप Zintrac को फंजीसाइड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
वो आप यारा के जो टैंक मिक्स है उस पे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा फंजीसाइड इसके साथ कंपेटेबल है. Please doses of HDP 3-year plants. So Fida Hussain is asking ki what are the doses of YaraMila complex, YaraMila Nitrabor for 3-year plant You've got you do in New Zealand? Generally with 3-year-old plants, I mean, as I said earlier, the first couple of years we're hand dressing and we'd be putting on, say, 50 grams each time of, say, complex, and then we would come in and do probably 50 grams of Nitrabor, and then we would alternate, and then we'd come back and do complex. Once we get to about that 3-year stage, then the orchard is starting to get established, and then we actually we don't hand dress anymore. I mean, I suppose that's the advantage we have on flat land. We've got tractors and fertilizer spreaders, so it's all mechanically applied from year 3. So then we start working on kilos per hectare. So we would be putting on, probably 150 kilos of complex per hectare per time. So what that means in terms of rate per tree at 3 years, probably more around 75 to 100 grams of complex per tree. So I think, Jagmohan, you have got a program for younger trees, haven't you? You have an India program. So here for young trees? actually it was difficult for me to इनकी आवाज क्रैक कर रही थी बागुल साथी. तो जो हमारा रिकमेंडेशन है, मैं आपको इसका क्रॉप प्लान जो है आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए 9888244354 पे, और मैं आपको जो है प्रॉपर इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो आपको बताऊंगा. वैसे आपका 100 ग्राम तक आप YaraMila कॉम्प्लेक्स और नाइट्रबो जो है आप 75 ग्राम के आसपास तक इसको सॉइल में अप्लाई कीजिए 3 साल के प्लांट्स के लिए. बाकी जो कैल्सिनेट है और जो आपका यारा रेगा है उसका भी irrigation शेड्यूल आपके साथ शेयर जरूर करूंगा. There is a question from Rahul. Yara 12 हाफ इंच स्टेज में नहीं राहुल जी. सी half inch green tip पे David, there is a question that can farmer use half inch green tip stage with sulfur? Actually, farmers are applying sulfur in foliar application these days. So is it advisable? We had that question earlier, didn't we? At half inch green tip stage, MAP and sulfur? As a foliar? Sorry, Jagmohan. You're asking me if that can be put on as a foliar application? अब बागवान साथी देखिए, राहुल जी, अभी भी हमने ये चीज पहले डिस्कस किया है कि देखिए हो सकता है कि किसी के अपने प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम ये सजेस्ट नहीं कर सकते हैं. उसका रीजन ही यही है कि हम फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और साथ में जो है रिकमेंडेशंस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी के एक्सपीरियंस पे अगर ये चीज सही जाती होगी तो हम कह नहीं सकते, बट हम वही चीज रेकमेंड करेंगे जो फॉर्मुलेटेड हो और साथ ही साथ वो रेकमेंडेड हो. क्या बोरोन को फर्टिलाइजेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरा पिंक स्टेज. One farmer is asking, can I use boron in fertigation because his stage has gone above pingbird stage? Can he use boron in fertigation? You can, but you'd need to be very careful. I mean, generally when you're using, like we use crystallon or, a soluble NPK grade in New Zealand for fertigation, and that generally has trace elements with it. It has boron and zinc and manganese and iron, etc. You got to be very careful that you don't put too much boron on. Apples have a fairly good tolerance to boron, so
Yes, if you had a boron source that it was water soluble that you could put through fertigation, then that is fine. It's not the same as putting it on foliar, but it would have an effect. Yeah. यशपाल ठाकुर जी, मुझे डेविड स्पेंसर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बट आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आप इसको चैट में डाला है, इसका आंसर हम आपको उसके थ्रू ही दे पाएंगे, क्योंकि मैं इनको एग्जैक्टली सुन नहीं पाया। आप कहना चाह रहे हैं कि पिंक बर्ड स्टेज से कितना ऊपर गया है आपका स्टेज? कुछ आप लिख सकते हैं क्या, टाइप कर सकते हैं? अगर तो आपका स्टेज जो है पिंक बर्ड से 10% तक भी ऊपर गया, तब भी आप इसकी फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप फॉगिंग की तरह जो है, फॉग के रूप में इसका आप बॉट्रैक का 1 ml पर लीटर के हिसाब से फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। There's a question from Shyam Singh Verma, David. He's asking which method of fertilizer application has higher use efficiency, like soil basal application, fertigation, or foliar sprays? Yeah, no, it's a very good question, and that's why I guess that's why we talk about all the different methods of applying fertilizer, and I think that's why in New Zealand, I mean, Yara has we have a good offering, because we can talk about solid fertilizer in the soil, we can talk about fertigation, we can talk about foliar. I think it's about what you're trying to achieve, and when we talk about fertigation, we often talk about there is a slightly higher nutrient use efficiency, because you're putting on little and often applications. You're putting it on in a water soluble form, you're putting on regular applications that bathe the roots. So generally with nitrogen, for example, in fertigation, we might say there's if you put on 100 kilos of nitrogen as solid, we might only need to put on 80% as fertigation. So there's probably a 20% better efficiency with nitrogen put on through fertigation, but not all nutrients are like that. When we put on, depends what you're trying to achieve with a foliar. When we put on foliar boron, foliar zinc, foliar manganese, we're bypassing availability problems from the soil. So therefore, especially trace elements, putting on Senifos at fruit set, the application or the uptake of phosphorus from the soil to the plant is limited when you have cold soil temperatures. So foliar applications bypass availability problems from the soil. So strategically, there are times where foliar applications are way more efficient than putting on solid fertilizer, but we need to remember that an apple tree, like any other crop, has a minimum requirement of nutrients. So we can't do it totally through fertigation or foliar. We need to find the mix of all three. We need to put enough nutrients on in the soil, but it's just about trying to find what's the best application method. But certainly fertigation, foliar do have higher efficiencies generally, but we can't rely on doing it only that way. श्याम जी, जैसे कि मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इनकी अभी सुनाई नहीं दे रही है, बट डेफिनेटली जो कॉम्बिनेशन है वो देखना पड़ता है। एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ से बेसल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सॉइल से ही जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होना है, वो भी डिपेंड करता है कि सॉइल में मॉइस्चर लेवल थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है। वन थिंग, जिनके पास सॉइल में मॉइस्चर लेवल कम रहता है, अगर वो उनके पास फैसिलिटी है फर्टिगेशन की, तो डेफिनेटली सॉइल में जो ड्राई फर्टिलाइजर है उसका एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए इनिशियल स्टेज पे। साथ ही साथ आप जो है फर्टिगेशन के तौर पे भी आप न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। फोलियर एप्लीकेशन डेफिनेटली स्टेजेस के बेसिस पे, क्योंकि 80% जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल थ्रू रूट्स ही प्लांट अब्जॉर्ब करेगा, और 20% जो है फोलियर एप्लीकेशन से आप कॉम्पनसेट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास मॉइस्चर लेवल कितना है, आपके पास वाटर फैसिलिटी है या फर्टिगेशन के फैसिलिटी है, उसके बेसिस पे ये कॉम्बिनेशन में ही। और फोलियर तो डेफिनेटली आपको फोलियर भी करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन टू द सिचुएशन।
तो ये कॉम्बिनेशन में ही आप जाइए और उसके बेसिस पे ही आप जो है ये निर्णय लीजिए। हाँ, सॉइल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटली फर्टिगेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते, और फोलियर ऐसा भी नहीं कि फोलियर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। तो इस कॉम्बिनेशन में आप कीजिए। आप यारा का जो है क्रॉप प्लान हम आपसे शेयर करेंगे। गेट इन टच विद डॉक्टर यारा, जैसे कि आप को यहाँ पे मैं दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप 180012192272 पे आप कॉल कीजिए और वो आपको डायरेक्टली जो है आपको आपकी जितने भी क्वायरीज हैं जो अभी अनएड्रेस रह गया है क्योंकि नेटवर्क की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो वो भी वहां पे एड्रेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच, थैंक यू डेविड फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड मैं सभी फार्मर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने पेशेंटली यहाँ पे बने रहे और जो है हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते रहेंगे। डॉक्टर यारा पे आप कॉल कीजिए, फर्दर कोई आपकी कोई क्वेरीज रहेंगी तो हम उसको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच डेविड फॉर योर वैल्यूबल टाइम। We'll catch up next time, definitely. For very welcome, a new and session. Best of luck for the coming season. Yeah, thank you. धन्यवाद बागवान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार।